And in the previous week, we already reviewed what we went through in the class before the online classes. मेरी आवाज सबको आ रही है? Can you all hear me? Yes, sir. Are you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we talked about the design process, and then we also talked about standards, codes. We went to all the phases of design. Then we discussed design factor. We also discussed the factor of safety. ठीक है जी. Um, Today we are going to go into some of these dimensions and tolerances, and then we will go to the next topic, which is threaded joints. ठीक है जी. तो अभी हम थोड़ा सा dimensions and tolerances के बारे में बात करते हैं. Let's see. Actually, please keep your mics muted unless and until you want to say something. You can raise your hand to say something, and I'll unmute your mic. ठीक है जी. इस तरह से disturbance नहीं होगी. ठीक है जी. Now, looking over here at this slide, can everybody see these slides? I hope you do, right? जी सर. हम बात कर रहे थे, let's say कि हम बात कर रहे हैं normal size. What is normal size? Normal size is the size we use in speaking. ठीक है जी. मतलब हम किसी component के बारे में, किसी part के बारे में, if we're talking about a part or a component, the dimensions that we use in speaking, that is called nominal size. ठीक है जी. For example, if I say 4 inches diameter of a shaft, it is not necessarily true that exactly the dimension of that shaft will be 4 inches. It might be 4 inches plus minus something. ठीक है जी. और वो जो plus minus something है, we call it limits. It is the stated maximum and minimum dimensions for a certain dimension. So for example, यहाँ पे जो limits हैं in this example, that is 0.002 इसका upper maximum limit होगा in addition to 1.005, और minimum जो dimension of this will be 1.003. ठीक है जी, which is the minimum one. If we talk about tolerance, tolerance is the difference between the two limits. And there are two types of tolerances. It is either bilateral tolerance or unilateral tolerance. भी हम कह सकते हैं. For example, this here is a bilateral tolerance. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है it states a bilateral tolerance, दोनों तरफ है. The dimension is 1.005 and then plus minus 0.002 plus, so it is either 1.007 or minus 0.002, which is 1.003. तो ये जो plus minus है, it makes it bilateral. It can go in any direction, up or above or below 1.007. तो दोनों directions में है, and that's why it is called bilateral. If we say unilateral tolerance, so unilateral tolerance is only unidirectional. For example, 1.005 plus 0.004. There is no lower bound than 1.005. ठीक है जी. So the dimension is just in one direction.
and that is why it is known as unilateral tolerance. So the basic dimension is taken as one of the limits, and the variation is permitted only in one direction. For example, ये जो हमने किया. So I hope you understood these, and then the next thing is, अगर अगर आप देखें तो there is another term that we use जिसको हम clearance कहते हैं. Now, what is clearance? Clearance refers to the difference between between the difference in sizes between two mating parts. For example, there is a cylinder and a piston. ठीक है जी? Um, so it is between two cylindrical parts. ठीक है जी? Cylindrical parts such as a bolt or hole for that bolt. तो इन दोनों के दरमियान there is going to be some difference. For example, if I have if there is a certain um, let's say hole, ठीक है जी, and in that hole we are going to put another part which is let's say ये कोई part है. So now the difference between these two, which is the white space, that is known as clearance. If I take the if I take the dimension of this circle, ठीक है जी, and I take the dimension of this circle, which is the diameter of this and the diameter of this. So in दोनों के दरमियान the difference will be diametral clearance. If I take the radii of these two, then the difference of these two will be uh, the radial या radial clearance हम उसको कहेंगे. And if it is between the diameters, so then we will call that diameter clearance. For example, अगर इसी चीज को हम देखें, we have a piston and cylinder, ठीक है जी. तो एक पिस्टन और सिलेंडर के दरमियान भी there is clearance, ठीक है जी. If this is a cylinder and there is a piston that goes in there, for example हमारे पास यहाँ पे एक पिस्टन है जो इसके अंदर हो, तो then then इसको हम क्या कहते हैं, clearance, where the white space between these two, ये जो जगह है, that is our clearance. ठीक है जी. I hope you did get the concept of clearance. Then there is interference. Interference क्या है? It is the opposite of clearance. The opposite of clearance means that when the internal member is larger than the external member. For example, यहाँ पे ये जो member है, the cylinder, ये वाला या ये जो cylinder है, let's say that this is of a smaller diameter than this one. तो फिर इनके दरमियान जो fit होगा, that will be interference fit. For example, हम एक और भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे हम किसी let's see if I can draw it. अगर अगर मैं ये एक चीज़ ले लूँ, ठीक है जी, let's say if I take this thing which is a hammer, ठीक है जी, and if I put in a handle in here, so that handle is going to be bigger than the diameter that we have for this handle. If it's a hammer, तो यहाँ पे अगर if I want to show this मतलब hole for the hammer, so that hole is smaller, ठीक है जी, than this handle.
and this will cause interference. So that is known as interference. जो अभी हम कह रहे थे कि where the internal member is larger than the external member. ठीक है जी. हमारे पास अलाउंस इज द मिनिमम सेलेक्ट स्टेटेड क्लियरेंस या द मैक्सिमम स्टेटेड इंटरफेरेंस. ये दोनों चीज़ें जो है उसको हम अलाउंस कहते हैं फॉर मैटिंग पार्ट्स, कि इसमें ये अलाउंस है. ठीक है जी. इसी तरह हम फिट व्हाट इज फिट इज basically the amount of clearance or interference between two parts, उसको हम fit कहते हैं. um, when we do geometric dimensioning for parts, so that is GD and T, which is geometric dimensioning and tolerancing. तो इसके लिए एक comprehensive system मौजूद है. And we use that system of symbols. Here there are rules and definitions, and for theoretical perfect geometry along with allowable variations क्या इसमें कितने हो सकते हैं. So we have to take care of that. जब भी हम कोई part design करते हैं तो जितने allowable मतलब tolerances हैं, जितने सिस्टम में जो सिंबल्स हैं हम उसी से ही उसको जो है उसको डिनोट करेंगे, एंड वी विल पुट व्हाटएवर डायमेंशंस आर सजेस्टेड इन दैट सिस्टम. ठीक है जी. आपको हैंडबुक्स में मिल सकते हैं ये स्टैंडर्ड्स. नाउ लेट्स से जब आप डिज़ाइन करते हैं तो बेसिकली अ डिज़ाइनर इज रिस्पॉन्सिबल for specifying all the tolerances for every dimension. जितने भी dimensions है उसके लिए वो specify करता है tolerances. He also gives consideration to the functionality, if किस तरह fit होगा assembly and manufacturing process, quality control and cost. Because जितना आप अपने tolerances को टाइट करते जाएंगे, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट कि व्हाट हैपेंस टू योर कॉस्ट, दैट गोज अप. आपका प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन स्लो होता जाता है. इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल को भी आपने देखना होगा कि हाउ many stations do you want to say, that also takes या आसान हो. ठीक है जी. तो जितना आप एक्सेसिव प्रिसीजन में जाते हैं, जितना आप एक्सेसिवली डायमेंशंस को टाइट बनाते हैं, तो दैट इज अ पुअर डिजाइन चॉइस. यू शुड नॉट गो फॉर वेरी प्रिसाइज design unless and until it is required. So क्योंकि it limits your manufacturing options, फिर आप और तरीकों से इसको नहीं कर सकते, because you have to your excessive precision design basically drives that. ठीक है जी. और आपका कॉस्ट भी ऊपर चला जाता है. तो जो लेस एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस हैं, those should be selected, even though the part not may be less than perfect, but if it works for you, it should be fine. अगर वो फंक्शनैलिटी जो है वो उसकी असरअंदाज नहीं होती, तो what if it is less than perfect, you don't care. ठीक है जी. So as long as the needs are satisfactorily met, you do not need to worry about the precision and the tighter tolerances. ठीक है जी. I hope you got the point over here. ठीक है जी. अच्छा, जब हम डायमेंशनिंग करते हैं तो there are different choices available for you to dimension. For example, हमें appropriate dimensioning करनी चाहिए. In order to अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिजाइनर कि वो डायमेंशंस दे. ये पिछले स्लाइड में भी हमने कहा. एंड इट शुड इंक्लूड जस्ट इनफ डायमेंशंस. इनफ मींस कि नॉट टू मच डायमेंशंस. ठीक है जी. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप
उसमें बिला ज़रूरत जो है एक्स्ट्रानस इंफॉर्मेशन डालें। जब तक वो रिक्वायर्ड ना हो, you do not need to do that because it leads to confusion or people may interpret them differently। ठीक है जी, तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट होगी और लोगों को कंफ्यूज भी करेगी। फॉर एग्जांपल ओवर स्पेसिफाइड डायमेंशन, जैसे आप यहाँ पे देखें इस फिगर में वी हैव अ डायमेंशन फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है जी, एंड देन फ्रॉम हियर टू वेल इस सेंटर से लेके देन इस सेंटर तक, ठीक है जी, और फिर यहाँ से इस सेंटर से इस एज तक, और ये सारे डायमेंशंस दिए गए हैं। अब इन एडिशन टू दैट ये डायमेंशन भी दिया गया है, ठीक है जी, बल्कि इन एडिशन टू दैट ये डायमेंशन भी दिया गया है। तो दिस इज ओवर डायमेंशनिंग। वी डू नॉट नीड ऑल दीज डायमेंशंस। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस डायमेंशन को स्टेट करते, फॉर एग्जांपल हम स्टेट करते ये वाला डायमेंशन और फिर ये वाला और फिर ये वाला, दैट वाज आल्सो इनफ। या हम ये और ये स्टेट करते, दैट वाज इनफ। या फिर ये वाला और ये वाला अगर हम स्टेट करते, दैट वाज आल्सो इनफ, बिकॉज वी कैन इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये 51 बन जाए और ये 51 बन जाए तो फिर क्या होगा कि दिस विल बी 102। यानी अगर टॉलरेंसेस हम डालें या ये चीजें डालें तो देयर फोर एक्सेसिव डायमेंशंस जो है दोज आर नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आप उसको डालते हैं दे क्रिएट कंफ्यूजन एंड जो प्लस माइनस टॉलरेंसेस आप करते हैं तो टू डायमेंशंस तो वो फिर इनकम्पेटेबल बन जाते हैं, ठीक है जी। लेट्स सी, अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल दीज आर सम choice of dimensions for 4 examples of which dimensions to specify आपको दिए गए हैं। For example हम we can dimension this part as we'll specify this dimension with the tolerance, again this dimension and this dimension, so that is fine। इसी तरह अगर हम सिर्फ ये डायमेंशन स्पेसिफाई करें एंड देन दिस डायमेंशन एंड द रिमेनिंग वन वी से दैट द टोटल शुड बी 150 प्लस माइनस 120, सो दैट इज आल्सो अ चॉइस, ठीक है जी। या अगर हम ये डायमेंशन यहाँ से फ्रॉम दिस रेफरेंस टू दिस एज एंड फ्रॉम दिस रेफरेंस टू दिस एज and then specify this dimension, so that will also work। और जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में मैंने कहा कि यू कैन ईदर स्पेसिफाई these according to one reference point and this will be your reference point। With this reference point you will state the dimensions of all the references, the rest of the references, so this will be a good choice for you for dimensioning, ठीक है जी। we can dimension in different ways। for example अगर आप देखें तो cumulative effect of individual tolerances भी आप देखेंगे कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखें, ये मैं 50 प्लस माइनस 1 करता हूँ, ये 50 प्लस माइनस 1 करता हूँ, ये 51 प्लस माइनस 1 करता हूँ। द चांस इज कि यहाँ पे अगर मैं डायमेंशंस लगाऊं तो ये अगर 51 51 51 बन जाए तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द टोटल डायमेंशन नाउ 153, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो डायमेंशन है दैट विल गो टू 153, ठीक है जी। तो इस किस्म के डायमेंशंस अगर हम लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि आपका टॉलरेंस जो है दैट वो स्टैक अप हो रहा है, वो जमा हो रहा है, वो एक दूसरे के ऊपर जो है स्टैक हो रहा है। तो एक है हमारे पास चेन डायमेंशनिंग। चेन डायमेंशन में आपके पास लार्ज स्टैकअप्स बनते हैं, जैसे ये केस है। तो दिस इज चेन डायमेंशनिंग, ये वाला ऑफ मेनी स्मॉल टॉलरेंस इन सीरीज। लेकिन हम इस तरह से भी बेस लाइन डायमेंशनिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मिनिमाइज करता है लार्ज टॉलरेंस स्टैकअप को। जैसे
let's say if we select some baseline, for example ये edge जो हमारे पास है, this is our baseline, and we only give dimensions with reference to this baseline. यानी हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेके this is our one dimension, we give this is our next dimension, and this is our last dimension. So what happens in this way is that now you have a limit on this dimension, but there is also a limit on this dimension. This cannot be more than 100 plus minus 1, and this cannot be more than 150 plus minus 1. So ये ज़्यादा से ज़्यादा ये dimension जो है, this will only go to 151 for the maximum. लेकिन इसी पार्ट को अगर हम इस तरह से डायमेंशन करें तो this dimension might go to 153, which is a large stack up of the dimensions. ठीक है जी? Did everybody get this point? Are you guys with me? Yes, sir. Yes, जी sir. सर। Okay. Now let's look at this problem. ठीक है जी? हम जब stack up करते हैं dimensions, तो again there should be some dimensions जिसके बारे में that should not go beyond some limits. ठीक है जी? For example, यहाँ पे अगर आप देखें तो it says that a shouldered screw, जो कि हमारा एक ये shouldered screw है, let's see, this is a screw. ठीक है जी? इस screw में क्या है कि they say that this screw contains 3 hollow right circular cylindrical parts. ठीक है जी? इसमें 3 parts हैं. ठीक है जी? तो let's see what those parts are. Hollow cylindrical parts हैं. देखें, एक part जो है वो ये है. ठीक है जी? ये वाला part. दूसरा cylindrical hollow part जो है वो आपका ये वाला part है. ठीक है जी? तीसरा पार्ट जो है सिलेंड्रिकल हॉलो पार्ट, वो ये वाला पार्ट है. ठीक है जी? तो ये 3 पार्ट्स हैं हमारे पास. वो कहता है कि cylindrical parts on the screw before a nut is tightened against the shoulder. ठीक है जी? To sustain the function, the gap W must equal or exceed 0.008 millimeter. यानी आपका जो ये डायमेंशन है, लेट्स सी, आपका जो ये डायमेंशन है which is W. ठीक है जी? ये वाला, this should be either equal to or it should exceed 0.08 millimeter. So वो कहता है कि the part in the assembly as depicted in 1-10 have dimensions and tolerances as follows. ठीक है जी? कौन कौन से? हमारा A जो है that is 44 plus minus 0.08. इसी तरह B के लिए भी टॉलरेंसेस दिए गए हैं, C के लिए भी टॉलरेंस दिया गया है प्लस माइनस, एंड डी के लिए भी प्लस माइनस टॉलरेंस दिया गया है. तो वो पूछता है ओवर हियर कि अगर ऑल द पार्ट्स एक्सेप्ट द पार्ट विद द डायमेंशन डी, ठीक है जी, ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इज सप्लाइड बाय द वेंडर. तो ये सारे पार्ट्स आप खरीदते हैं बाहर से. द पार्ट कंटेनिंग द डायमेंशन डी इज मेड इन हाउस. ये आप अपनी फैसिलिटी में बनाते हैं. सिर्फ पार्ट डी जो है, ये डायमेंशन डी वाला पार्ट जो है, इसको आप फैसिलिटीज में बनाते हैं. वो कहता है कि एस्टिमेट द मीन एंड द टॉलरेंस ऑन द गैप W. ये जो W है, ये वाला मालूम करें. And what is the basic value of D that will ensure that W should be greater than or equal to 0.08 millimeters. अच्छा, इस केस में हम क्या करेंगे कि वो कहता है कि estimate the mean and the tolerance on the gap. अच्छा, mean और tolerance on the gap. W हमारे पास वैसे किस चीज के बराबर होगा? ये वाला W देखो, उससे बराबर है.
A minus B minus C minus D। ठीक है जी, a माइनस बी माइनस सी माइनस डी के बराबर होगा। तो लेट्स पुट दैट ओवर हियर, क्योंकि ये a है और इससे अगर हम b और d और c ये सब हटा दें तो इट विल गिव अस w। तो a माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है जी, ये हमारे w का डायमेंशन होगा। ठीक है जी। तो this is going to basically give us all the dimensions, मतलब the dimension w। ठीक है जी। if we look at that, तो वो हमारे पास कितना आ रहा है कि 44.50। why 44.50? ये उसका जो है नॉमिनल डायमेंशन 44.50 है। ठीक है जी। माइनस 19.05 माइनस 3.05 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास निकल आता है 0.017 मिलीमीटर। ठीक है जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ W। ठीक है जी। अच्छा, फॉर अगर हम बाइलेटरल टॉलरेंसेस लेते हैं, तो बाइलेटरल टॉलरेंसेस में हमारे पास क्या है कि वी विल स्टेट द बाइलेटरल टॉलरेंसेस ऑफ दिस। तो इसके साथ क्या था 44.5 प्लस माइनस 0.08। तो लेट्स से हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है जी, ये मतलब जो भी डायमेंशंस है वी कैन हैव TW इन ईदर डायरेक्शन, लेकिन हम प्लस वाले वैल्यूज ले लेते हैं जो कि प्लस माइनस हम बाद में लगा सकते हैं। तो वही इसके साथ 0.8 है, 0.08 है, इसके पास 0.02 एंड देन प्लस माइनस 0.013 प्लस माइनस 0.02। ठीक है जी। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो दिस इज आर प्लस 0.25। तो इसका मतलब ये है कि इफ दिस इज द डायमेंशन, तो ईदर it is 70.17 plus minus 0.25 या मतलब प्लस 0.25 या माइनस 0.25। if it is plus 0.25 तो that will be the maximum value of W। तो W max turns out to be 0.17 जो कि ये basic dimension है इसका, and plus 0.025, so the maximum is 0.42। अगर हम मिनिमम की बात करें तो इससे ये सब्ट्रैक्ट करें which is the lower limit, and that would give us minus 0.08 मिलीमीटर। ठीक है जी। सो 10 बोथ, इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है? देखिए, एक माइनस है और एक प्लस है, तो इसका क्या मतलब है कि इंटरफेरेंस भी हो सकता है और क्लियरेंस भी हो सकता है। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम W min और W max को देखें तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम W min इज टू बी 0.08 अगर हम कहें, देन फिर आपका W क्या होगा? W mean क्या होगा? इट विल बी W minimum प्लस TW। एक्सक्यूज मी। सो दैट इज 0.08। ठीक है जी। या ये वाला 0.08 प्लस 0.25, अगर इनको हम जमा करें तो दैट शुड बी 0.33 मिलीमीटर। 10 आपका डी डायमेंशन जो अपने इन हाउस आप बनाते हैं, इन हाउस उस पार्ट का डायमेंशन क्या होना चाहिए? दैट विल बी ए माइनस बी माइनस सी माइनस डब्ल्यू। ठीक है जी। टेक अवे द रेस्ट ऑफ द दोज फ्रॉम ए ऊपर वाला एंड देन यू नो द रेस्ट ऑफ देम, तो आपके पास डी बच जाएगा which will be and you get 22.07 मिलीमीटर्स। आप ये डी पार्ट जो इन हाउस बनाते हैं उसका डायमेंशन इतना होना चाहिए। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि अगर आपका W ये है, ठीक है जी, तो W का डायमेंशन अगर ये है तो इट कैन बी माइनस, मतलब इट कैन गो बिलो दैट बाय 0.08। ठीक है जी। तो दिस इज द माइनस, मतलब W min आपका इतना होगा
और W मैक्स जो है, मतलब ये डायमेंशन आपके पास दूसरी तरफ जा सकता है। समझ आ रही है बात की? यस सर। ठीक है जी। तो इट विल गो बियॉन्ड। देखें अगर हम एक्चुअल डायमेंशन को देखें तो एक्चुअल डायमेंशन कितना है, 0.017 है ना, लेकिन उससे जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज मोर देन 0.017, तो वो बचेगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है जी। रादर अगर हम पीछे जाएं, लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे जाएं तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली W को पुश कर रहे हैं इस डायमेंशन, मतलब W ये गैप तो होगा ही नहीं। ठीक है जी। यहां से मतलब ये आपका डायमेंशन फिर यहां तक होगा, ये W नहीं होगा बल्कि मनफी में होगा W। ठीक है जी। यस सर। अच्छा ठीक है जी, दैट इज द the end of this chapter। ठीक है जी।